It's not easy for a youngster to win big. It's far easier in the West, in the US. A Pakistani youth has no chance. You need to learn as well. First, you need to learn, and then you need to learn. You have to have a scaling up plan. जब आप बना रहे हैं, मार्केट में लेके आए, अब आप एक खास इकोनॉमिक से चल रहे हैं। माँ बसेरा जो है एक बहुत ही इमोशनल जगह है और फॉर मी इट्स अ श्राइन. आई सी माई ऑरा ऑफ माई मदर अराउंड देयर. Assalamu alaikum everybody, welcome to Runway Pakistan. मैं हूँ आपकी host वलिया and today we have a very special guest with us all the way from Lahore. He is a true example of successful entrepreneurs. He has over 30 years of experience in technology, healthcare and non-profit sectors. He is the executive director at NetSol Technologies, CEO and founder at HospitALL. He is the founder at Ma Basera, which is a home for elderly women. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much. So overwhelming to hear so much from you. Even I lose count. What hat am I wearing today? So, but this is how life is. मैं बोलते हुए मुझे याद नहीं रह रहा था. How do you manage like being all of this? It's a very good question, and many people ask me, how do you actually do that? You need to bring in right teams. You can do an overview, you can give a vision, but to execute, you have to have the right team. So I try to bring in the right people and then delegate. So who is Ayub Ghauri for the audience? Like how did it start and कौन सा venture पहले start हुआ था? कैसे ये शुरुआत हुई entrepreneurship की? Acha, again, it's a very philosophical question. Who am I? Aap kaun hai? Main kaun hu? I think I'm a mixture of many personas. I'm a social activist. I'm a visionary. I try to lead. I don't know if I'm a leader, but I try to lead. I'm a mentor. Sometimes I switch positions. I'm a student. Because if you want to stay abreast of everything, you need to learn as well. First, you need to learn, and then you need to learn. So that you can give it back to, with new learning, whatever experience you've had, then you can, reinvent yourself and give it back to whoever needs your advice. So, education कहाँ से हुई आप? I grew up in Lahore. My early days went to FC College in Lahore. Then I moved to California. I did my management information systems degree over there and moved back to England from there, from LA to England, got married over there and stayed back there for a long, long time. And I have been a serial entrepreneur throughout my life, always trying to make a difference, always trying to bring a new innovation. I mean, we're talking about an era when entrepreneurship was not defined at that, pre-90s. So there has been a lot of learning. Then NetSol Technologies happened within the family. It's NetSol Technologies was set up by my brothers. I was not part of it initially, but when I was running a business, a very successful fashion, Pakistani, high-class fashion, high-end fashion, I was invited to join NetSol in England. So that was late 90s. And I stuck around for a couple of years and moved to Pakistan. I thought by that time I realized it's been a long, long time. I must go back and all that. So I came to Pakistan and did a few other entrepreneurial things. Startups. Yeah. You set up a training institute for call centers at that time, BPOs and all that. And then I was brought back into NetSol Technologies. And then since then I've stayed with NetSol Technologies. I've still travel
back to Europe because England is also my home. So in 2013, I went back to England. I stayed there within England and Europe. Germany, stayed in Germany as well. Once that assignment was done, came back to Pakistan. And that's where 2016, the chapter within properly getting into entrepreneurship, entrepreneurial ecosystem, that phase started. Or Inspire is the incubator within NetSol Technologies. So I was heading that. And while there, I realized it's not easy for a youngster to win big. It's far easier in the West, in the US, let's say Stanford में कहते हैं कि ये ड्रॉप आउट हो गया था पहले साल, लेकिन the kind of exposure, the kind of knowledge they get, एक पाकिस्तानी youth has no chance, to have that mindset. पाकिस्तानी यूथ तो डिपेंडेंट है थ्रू आउट ऑन द फैमिलीज. वहाँ तो घर से निकल जाते हैं 16 साल के हुए, जी घर से निकल जाते हैं और दे आर नॉट आंसरेबल टू द फैमिली. यहाँ फैमिली 4 साल पढ़ाती है और कहती है अब तुमने जॉब करनी है. एग्जैक्टली ना. और जो स्टार्टअप माइंडसेट वाले हैं वो कहते हैं कि जी हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है और हमने अब हमें ये करने दो. पागल हो रहे हो, इसलिए पढ़ाया था तुम्हें, चुप करके काम करो तुमने. और इसी वजह से आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम इन आवर कंट्री जो बच्चे हैं वो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली कर ही नहीं सकते बिकॉज हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी पूरा करना इज एब्सोल्युटली. बोलेंगे देखें होता क्या है कि आपकी ब्रॉटअप जिस तरह से हुई ना, आप इंडिपेंडेंट थिंक नहीं कर रहे होते. जो बड़े चैलेंजेस हैं स्टार्टअप्स के लिए वो रेजिंग दैट एंजल फंडिंग. ना आपके पास अपनी सेविंग्स होती, उधर तो लोग खुद काम करके खुद ही सेविंग कर लेते हैं, उसी इकोसिस्टम में घूम रहे होते हैं. इन्वेस्टर भी बैठा हुआ है सिलिकॉन वैली में, सब कुछ हो रहा है. यहाँ ऐसा नहीं है. तो यहाँ बड़ी स्ट्रगल बहुत बड़ी है. तो मुझे लगा ना यंगस्टर के पास क्रेडिबिलिटी होती है, ना उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसके पास सिर्फ ड्रीम्स होते हैं, पैशन होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी बायर्स फॉर जस्ट प्योर ड्रीम्स और ड्रीमर्स. So I wanted to create a business study, case study, कि मैं how someone like me who's been around for so long, how they would do, how they would set up a startup. And it's been an exciting journey since 2017, 5 years plus हो चुका है. But still learning every day, there is more learning. And there are exciting things happening. जब NICAD आपने भी जिक्र किया, NICAD is actually National Incubation Center for I wanted to know that. Aerospace Technology. There are bunch of national incubation centers that are funded by the government. एक ये public private partnership है, Ignite. Ignite is the body that comes under Ministry of IT and Telecom. और उसके अंडर फंडिंग मिलती है टेलकोस की तरफ से टू सेट अप इंक्यूबेशन सेंटर्स. तो इस वक्त इस्लामाबाद से शुरू होके लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, ये जो लेटेस्ट है नाइकैट, ये वर्टिकल स्पेसिफिक है. यानी कि जो और NICs थे, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, दे वर वेरी जेनेरिक एक्सेप्ट फॉर फैसलाबाद जो कि एग्रीटेक पे था. तो इसको देयर इज़ अ थर्ड पार्टनर. एक तो इग्नाइट है जिसने इशू किया आपको इंक्यूबेशन सेंटर के फंड्स. एक हम हैं NetSol टेक्नोलॉजीज जिसको मैं जहाँ से लीड कर रहा हूँ. एंड वी हैव अ कंसोर्शियम पार्टनर्स एज वेल, जिसमें एयर यूनिवर्सिटी है, जिसमें PAC कामरा बेस है, जिसमें इनोवेटर्स गैराज है. लीड हमने किया लेकिन सब ने मिल के बिड किया एंड वी वन दैट बिड. फोकस्ड क्योंकि थर्ड पार्टनर इज पाकिस्तान एयरफोर्स अंडर नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क NASTEP. तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज जो है बड़ी एक्साइटिंग फील्ड है. वहाँ जाके जो डिस्कवर किया हमने आर यूथ. एंड अच्छा, वहाँ सिर्फ यूथ भी नहीं है. एयर यूनिवर्सिटी से हमें प्रोफेसर्स तक ने स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई किया और वो आए और उनको भी हमने इंडक्ट किया. Also, उनको वैसे भी यहाँ बहुत कम
अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी, व्हाट डू यू से? अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर कम मिलता है। आपने बड़ी अच्छी बात की अपॉर्चुनिटी। अच्छा, उसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। देखिए, आप अपने तौर पे कर तो सब कुछ सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, यू हैव टू हैव अ कस्टमर, यू हैव टू हैव स्केलिंग अप प्लान। जब आप बना रहे हैं, मार्केट में लेके आए, अब आप एक ख़ास इकोनॉमिक से चल रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप इकोसिस्टम और टिपिकल बिजनेस में फ़र्क ये है, within traditional business, you are always looking for ROI immediately. हम यहाँ देखते हैं कि एक्सेप्टेंस हो रही है। अगर एक्सेप्टेंस, क्योंकि आप इनोवेट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सेप्टेंस हो, तो हम ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस हो रही है। तो अभी जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, वी इन्वेस्टेड टू मच टू गेट आउट टू लिटिल, बट our tests have proven कि there is acceptance of the product. इसको स्केल करना है, तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केल कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट के बीच में राउंड्स आते रहते हैं। तो ये पूरी एक जर्नी होती है स्टार्टअप की। तो हम ना सिर्फ एक प्रोग्राम फॉर द होल ईयर, 12 मंथ्स का प्रोग्राम उनके लिए लेके आए हैं, बल्कि उनको एक्सपोजर भी देंगे। उस प्रोग्राम का हिस्सा ट्रेनिंग्स हैं, उसका हेल्पिंग टू मेक बिजनेस प्लान्स हैं, हेल्पिंग टू एक्सपोज देम टू ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेंड्स, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्पीकर्स जिनसे वो लर्न कर सकें, affiliating, collaborating with other incubation centers in other countries, exchange of startups from different ecosystems, ताकि दोनों साइड के लोग ग्रो करें। एंड इन द एंड, इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट कहाँ से आएगा, एंजल इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। तो ये पूरी साइंस है जिसको लेके चल रहे हैं। सारा मेरा ख्याल है गेम इसी पे एंड होता है कि एंजल इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये Talking about startups, HospitALL was your first startup on what you did on your own. अच्छा, HospitALL was not my first startup, Okay. लेकिन पोस्ट 2016 आप कह सकते हैं। उससे पहले मैंने बड़े वेंचर्स किए हैं, काफ़ी अनसक्सेसफुल भी थे, लेकिन काफ़ी कुछ सक्सेसफुल भी थे। जब नाइकैट आया, और मैं HospitALL को ऐसे लेके चल रहा हूँ कि रादर देन गोइंग एन मैस, गोइंग थ्रू ग्रुप्स, Okay. ठीक है, कॉरपोरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उनको कन्वर्ट किया उनके यूज़र बेस को उठाने के लिए। एक स्ट्रेटजी है, लोग इस स्ट्रेटजी से यकीन ना करें, एग्री ना करें, दैट इज़ अप टू देम, लेकिन आई फील फॉर माई सेक, आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी। वी हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद इन HospitALL, और अभी ये चल ही रहा था कि नाइकैट की अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा, मुझे लगा कि नाइकैट की जो अपॉर्चुनिटी आई है, उसकी वजह से मैं बड़ा बिज़ी हो जाऊंगा, क्योंकि इट्स बेस्ड इन रावलपिंडी। ओल्ड एयरपोर्ट होता था रावलपिंडी में, चकलाला का, उसी के अंदर डेवलप हुआ है। तो मुझे, जी, तो बड़ा खूबसूरत बना है। सो मुझे लगा कि मैं वो टाइम नहीं दे सकूँगा HospitALL को। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर who can I bring in to support me? जैसे मैं पहले कह रहा था कि मैनेज करना है तो bring in right team. So I find somebody who was not completely unlike me. So it was a female, I'm a male. और दूसरी बात, she represents youth. So I brought a young lady called, very energetic, very passionate, and as much of a dreamer, but because she is younger, she is learning from me as well, Sana Khan. So she has had training background, लेकिन biosciences का भी MPhil था उसका। तो she got excited. हाँ, मज़े की बात है, हुआ क्या, ये बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है। People ask me for podcasts, interviews and all that. So she was one, and she kept inboxing me, sir, I would like to do a podcast with you. And I kept saying to you, all you have to do is search Google and you will get every aspect of my life, and I don't have time, blah, blah, blah. She didn't give up. One day, finally, I said, okay, आ जाऊँगा, कितनी देर लगेगी, मैं आऊँगा, in and out, कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट ज़्यादा नहीं दूँगा। तो कह लगी, सर आप आएँ तो सही। When I sat down, I saw something in her.
मैंने कहा यार ये जो है दिस यंग वुमन इज इन द रॉन्ग प्लेस, शी शुड बी पार्ट ऑफ हॉस्पिटल. एंड देन टेबल्स टर्न. अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कोट करने लगा. मैंने कहा आप आइए मेरे ऑफिस में. उसे नहीं पता था मुझे क्यों बुला रहे हैं. तो आप आए, मुझे आपसे बात करनी है. वेल आई, उसको फिर मैंने हॉस्पिटल के बारे में और बताना शुरू किया. एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस within. I mean, you represent youths, you represent females, you can get through that. And so up, as a result, finally I succeeded in getting her on board. Then we decided her focus should be on females, female health, female wellness, female fitness, because मेरा ये मानना है कि any kind of health decisions are taken by that 30-year something, the young housewife, the young woman जो न्यूली मैरिड है, एक आध बच्चा है, मे बी वन अनदर वन ऑन द वे. शी इज़ द वन कॉन्स्टेंटली, शी हैज़ द टाइम टू बी ऑन सोशल 24/7 एंड शी इज़ लुकिंग फॉर ऑल द न्यू ट्रेंड्स. तो मुझे लगा कि उन लोगों को अगर ट्रैक करना है तो फिर आई नीड समबडी लाइक सना खान. तो बेसिकली हॉस्पिटल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल क्या हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल वो ALL कर दिया मैंने, एक L ऐड करके उसको ब्रेक कर दिया. हॉस्पिट इन कैप्स ऑल. तो यानी ऑल विद इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम. तो उसमें देखिए एक तो बड़ा सिंपल है कि वी प्रोवाइड सर्विसेज टेली हेल्थ पे. अगर फ़ोन पे वी हैव बंच ऑफ डॉक्टर्स जिसमें जनरल फिजिशियंस भी हैं, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलिंग भी है. तो हम इस बंच को लेके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करते हैं. उनके जो यूज़र्स हैं उनसे भी करते हैं, इनडायरेक्ट टू पब्लिक भी जाते हैं कि यू कैन गेट इट ऑल पैकेज्ड. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वी गेट द कलेक्टेड डेटा, उनके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स से पेपरलेस कर देते हैं. इससे आगे चल के मशीन लर्निंग से मशीन जब ट्रेन होगी तो AI विल किक इन और उससे पता चल जाएंगे ट्रेंड्स क्या हैं और आगे. तो अभी इट्स स्टार्ट ऑफ द जर्नी, अभी तो बड़ा टाइम है. So what I wanted to know, Ma Basera. What is Ma Basera? Also, it's a home for elderly women. अच्छा, माँ बसेरा क्यों माँ बसेरा? Why you? Why? What made you think? So I am. What's the story behind the name as well? हाँ बताता हूँ. इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ. So देखें, there is one person I loved the most in this world was my mother, and I lost her very early in life. And I always yearn to do something in her name for her that would make her proud. She saw me as a very young kid, a young man. She never got to learn more about me. But तो मैं सोचता रहता था मुझे करना है माँ के लिए कुछ. तो वन डे कोई 3 साल पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक आदमी अपनी बीवी के साथ मिलके he was abusive, physically abusive to his mother. Yeah, I remember that video. He was That hitting his mother, yes, right? Yeah. 3 साल हो गए. Yeah, I remember that. That was the trigger point. मैंने कहा this has to stop. This has to stop. And I started working कि यार मैं छोटा सा यूनिट लूँ और उसमें सेटअप कर दूँ. My wife is very spiritual in many ways and she does a lot of good work, but even she didn't know what I was doing. So I started thinking. So one day she said, "What are you doing? You going this, that, and the other? जहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा. कहती I'm with you. You know, I'll whatever it needs. मैंने कहा wow, that's good. अच्छा, we are mashallah 7 brothers. From our mother, we are 7 brothers. Okay. There's a younger sister from second mother, but we are 7 brothers. So एक दिन जब मैं ये कर रहा था, बड़ा हम्बल सा कर रहा था, तो मैंने I mentioned it to group within the group of our brothers. तो कहने लगे यार this is fantastic.
तो ये तो हमारी भी तो माँ है ना, अगर आप तो भी खुद करोगे सारा। मैंने कहा रियली, आई गॉट वेरी टच, वी आर विद यू ऑल द वे। तो वो जो बजट मेरा अपना था उससे समझ लें 5x 10x हो गया। तो that's where Mom Basera started. It's for mothers, those mothers who have been abandoned by their families, or they themselves don't feel fitting in within the family anymore, and they are emotionally scarred. We don't just take mothers from the street. They come with references. सफ़ेद पोश बैकग्राउंड वाली जिन्होंने अच्छा वक्त देखा हुआ है, लेकिन अब जब उनका वक्त आया कि औलाद उनके लिए कुछ करे, औलाद ने अबैंडन कर दिया। How do they contact you? Like We have referral agencies होती हैं, हम उनके थ्रू। तो क्या है अब उनका मतलब what's the daily life in their life? It's a 24/7. It's a happy home. Okay. It is not a shelter home. Okay. I must say it's a happy home. हाँ, आप अगर जाएं तो a friend of mine, she wanted to know what Ma Basera is. इत्तेफाक से I was not in town. I arranged for her visit. So she went there for few people. And then it all went quiet. और हम हैरान रहे, हमने कहा यार क्या हो गया, ऐसा क्या बुरा हो गया वहाँ पे खाम। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया, कहती I was so emotionally drained कि I did not find words how I felt going there and talking to those mothers, listening to their stories and what society has been doing and how cruel. So you have to, देखिए आप किसी के पास जाके मदद कर देते, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे और इवन हेल्थ है, you don't induct them, they don't become 24/7 part of your life. Definitely. माँ बसेरा जो होम है, दिस बिकम्स 24/7 पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसी तरह चिल्ड्रन होम है, वो भी आपका बन जाते हैं, लेकिन माँ बसेरा जो है एक बहुत ही इमोशनल जगह है। और फॉर मी इट्स अ श्राइन। आई सी माई ऑरा ऑफ माई मदर अराउंड देयर एंड आई डू नॉट want to go there unnecessarily because I'm being a male. वो अपना comfortable rahe, without a male going there. But they welcome me, they treat me like their son. And it's very rewarding, emotionally very rewarding. It's very beautifully explained by you as well. And I really want to visit it someday. Please, next time when you're in Lahore, Inshallah. definitely come. Definitely I'm coming. Also, you explained your childhood, without being, without a mother. Yeah. I left Pakistan. I was late teens. Okay. I was late teens, and then I never saw her again. She passed away while I was away. That is one of the reasons that you didn't want to come back. था ही कुछ नहीं पीछे. Yeah. There was nobody to go back to. But then our dad was getting old. I wanted to spend time with dad, and dad used to travel then. Dads usually don't say it Yeah. But he turned very spiritual after our mother was gone, completely transformed. We never used to see our father when we were younger. When we were in Pakistan, he was always busy and did very well. But then different phases in life, and he was lost for a long time and became very spiritual. And then he has been a driving force in our lives. तो जो हमने सीखा है सर्वाइवल का, स्ट्रगल का, अटेनिंग सक्सेस, शेयरिंग, केयरिंग, गिविंग, हमने उनसे सीखा है, माँ से और बाप से, दोनों पेरेंट्स से गिविंग जो है उनसे सीखी है। तो भाइयों के साथ और बहन के साथ क्या रिलेशन है आपका? But she is like a daughter to us because she is much younger. Yeah. She's now grown up now. We love her dearly, and we had a adopted sister as well, and she stayed a part of our lives as well. Now she's married and all that. But we meet, both of them in Lahore. आना जाता रहता है. Brothers are all over the world, लेकिन converge होते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, तो good times again and all that. So it's really nice. Great feeling. And about what is it your love marriage?
Yeah, we want to talk मैं about I take it very funny. I said इनकी तरफ से love है, मेरी तरफ से marriage. नहीं नहीं नहीं. We grew up together. She's a Okay. cousin. Okay. We grew up together, and I think once she told me, your mother talked to me, and your mother told me that she would want you or her as her daughter-in-law. So I think that made an impact as well. Yeah. कि मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी. सच था ये या नहीं? Only she can tell. ये नहीं पता हमें. Only she can tell. But I'm sure there is some truth because they spent, because my mother went to England and stayed there for a few months. Okay. So it may well have. I'm sure it's truth. She didn't talk to you about it anytime? I was too young to get married at that time. So Like सोच के चलो तुम्हारे लिए मैंने कुछ पसंद कर लिया. I knew she liked her. Okay. लेकिन इतना मुझे नहीं पता था. इतना नहीं पता. हाँ, शादी हो जाए. But I'm happy, I think. Contentment is very important in life. जहाँ भी हैं, और तवक्कल एक बड़ा लफ्ज़ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो कंटेंटमेंट से ही निकला है. हर चीज़ पे ग्रेटिट्यूड आप करें एंड स्ट्राइव फॉर बेटर एंड देन गिविंग. जो मैं कहता हूँ आपसे, सोशल एक्टिविस्ट हूँ. आई थिंक ऑफ सोसाइटी, हाउ वी कैन मेक आवर सोसाइटी अ बेटर प्लेस. How can we make this world a better place for all of us, not only for a few people, few individuals. Okay, you talked about struggle, right? कि आपके वालिद साहब ने आप लोगों को, भाइयों को इस तरह सिखाया था कि struggle से you become a better human as well. Yeah. So आपका क्या है कि मतलब how do you say it to like the other people कि अगर आप बोलेंगे ये इस तरह कर लेना चाहिए हमारी सिस्टम को भी पाकिस्तान के, कि बच्चे इस तरह ग्रो अप हो. अच्छा, बाहर को अभी क्योंकि आपने देखा हुआ है. जी जी. I mean, I think the times we are going through, they are very testing times, and I think we can all turn it around together. There has to be a will. The will has to come from within. We, as members of society, we must play our part. We must pay our dues. जो इतना imbalance है वो इसलिए कि हम 12-12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, yet we don't file for tax. ठीक है ना, ये imbalance है. और हम जैसे लोग जो हैं जो कि जॉब में हैं, उनसे मैक्सिमम टैक्सेशन उनसे ही कर पाती है गवर्नमेंट. यानी आपको पिनलाइज, अगर देखा जाए, इम्बैलेंस की जब बात करता हूँ, कि जो एक मिडिल क्लास है उसे पिनलाइज किया जा रहा है, और जो अपर क्रस्ट है वो दे डोंट गेट इन द टैक्स नेट. तो ये टैक्सेशन जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एवरीवन मस्ट पे देयर ड्यूज. इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम देयर. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम एज अ सिविक, मैं देख रहा होता हूँ, nobody cares about सिग्नल पे रुकना है कि नहीं रुकना. क्यों नहीं रुकना? रुकना चाहिए. We are teaching our kids a wrong lesson. हम अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा देते हैं कि अब्बू घर पे नहीं है, डैड घर पे नहीं है, कह दो मैं बिजी हूँ, और इस किस्म की चीज़ें. इसका एहसास भी नहीं रहा हमें. वी फील कि नहीं, इसकी कोई, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है. बट डिसऑनेस्टी वहीं से शुरू हो जाती है. जब बच्चा देखता है तो चाइल्ड कॉपीज, ऑलवेज कॉपीज, स्पेशली अ बॉय कॉपीज, जो बाहर की स्ट्रगल अपने डैड से लेता है, जो उसका सॉफ्टवेयर साइड है वो मदर से आती है. तो वी मस्ट टेक चार्ज ऑफ आवर लाइव्स, आवर किड्स. हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं. क्यों नहीं है? ये कहना बड़ा आसान है. उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है. आपके पास उनके लिए टाइम है. टेक दम अवे. Quality time within Pakistan, take them away. Yeah. Teach them about things in life. A car trip over 2-3 days will teach them a lot about you. They will learn a lot from you, who you are, really are. ये हम नहीं करते. So, as society members, we must all play our part. We must be resilient. So,
आपको लगता है कि पैम्पर करना भी हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने बच्चों को, लाइक फॉर लॉन्ग एज? आप इसको पैम्पर कहती हैं, मैं इसे कहता हूँ नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इजी वे है कि पैसे दे दो। देखें क्या है, अब दो तरीके। अगर मेरे पास, इफ आई एम वेल टू डू, इफ माई चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मेरे पास दो तरीके हैं। या मैं रीज़न करूँ कि यार अभी आपकी एज नहीं आई है, ये नहीं हुई है, या ये कि मैं कहूँ मेरे पास टाइम नहीं है, यार जो भी है दे दो उसको। एंड दे गॉट इट सो ईजीली, दे डोंट रियलाइज द वर्थ ऑफ दैट। पेरेंट्स को यही लगता है ना कि हमने जो स्ट्रगल किया है बेसिकली इट इज फॉर देम, दैट्स द थॉट प्रोसेस, राइट? लेकिन जितनी आसानी से वो आएगा उनके पास, उतनी आसानी से निकल भी जाएगा। वो वैल्यू कभी नहीं कर पाएंगे। तो साथ साथ लेसन करते रहना चाहिए। मैं नहीं कहता लेक्चर करें, लेकिन लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल। मेक टाइम फॉर योर फैमिली, टेक देम आउट, गेट टू नो योर चिल्ड्रन बेटर। सो आई थिंक ये हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। So, concluding it, what do you want to tell to the upcoming entrepreneurs? What should they do? Like you talked about all of the system, the struggle that they face, and how you are making ways for them through NICAT as well. Like और भी opportunities हैं या उनको क्या करना चाहिए या while they like graduating and stuff? जी मैं बताता हूँ। देखें, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। You are out to do something extraordinary. Innovation क्या है? It means by definition something that was never done before. So if you have this in your mind, you've taken this mission कि I'm going to make a difference, then be ready for a ride of your life. I won't say bumpy ride. ज़रूरी नहीं कि bumpy ही हो. Stay resilient. Build your trust in people. People must be able to trust you. अगर आप लोग कहते हैं कि यार ये डिसिप्लिन नहीं है, वी कांट टेक हिम सीरियसली, उसका तो पता नहीं क्या करता है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन एंड यू वोंट बी हैविंग मैनी बैकर्स. सो फ्रॉम द आउटसेट यू मस्ट बी डिसिप्लिन्ड. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप नहीं जा सकेंगे बहुत ज़्यादा दूर. नंबर एक. नंबर टू जो है, find the right mentor. There are plenty of people like me who are there to help you. You just need to identify them. You need to ask them. You spend a lot of time on social media. Spend a lot of time on LinkedIn as well. Pick out business leaders, subject matter experts. Talk to them. Learn from them. अनलर्न फर्स्ट. आप ये सोचें आपको कुछ नहीं पता, आप उनको मैसेजेस करें, उनसे मिलने जाएं, कई इवेंट्स पे इन पर्सन आ रहे हैं. आस्क द राइट क्वेश्चंस, गेट देयर अटेंशन. दे विल गिव यू टाइम. सो देन फाइंड एंजल इन्वेस्टर्स हु कुड बैक यू अप. और इट स्टार्ट्स विद योर पेरेंट्स. सो इफ़ यू टेल योर पेरेंट्स और वो कह रहे हैं कि जॉब कर लो यार, फलां जॉब अच्छी है, मैं करवा दूंगा, think 10 times before saying yes, because that's the easy way. आप आगे जाके 10 लोगों को नहीं, 50 को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को आप jobs दे सकते हो if you are an entrepreneur, if you are successful. So get that in you, and constantly be on a learning zone. आप करते रहेंगे, resilient रहेंगे. एंड अब तो इंक्यूबेशन सेंटर्स विद इन यूनिवर्सिटीज़ हैं. इंक्यूबेशन जो बाहर के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो अब तब आते हैं, रेलिवेंट होते हैं, जब आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर लिया है एंड यू नीड अ हायर लेवल एक्सपोजर, देन यू गो टू NICs. I'll be very happy to entertain any kind of queries. I'm on social media. You can give reference of this podcast. वलिया का रेफरेंस दीजिए, इस पॉडकास्ट का दीजिए, the sponsors of this second cup का reference दीजिए, and I'll definitely listen to you, and whatever I can do or whatever I can tell you or guide you, I'll definitely do that. Thank you so much for this insightful discussion that you had with me today, and I learned a lot from you.
like इमोशनल साइड भी एक डिस्कवर हुआ आपका जब आपने माँ बसेरा की बात की, और एक इंटेलेक्चुअल साइड तो डेफिनेटली दैट यू हैव. Thank you so much. I'm very happy to be here. I hope we can have more such programs and people like yourself who's representing youth and attracting them to watch, listen to this podcast. And I'm always there to support. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.